हमारे यहाँ नहीं होते। पति अपने घर को छोड़ के लड़की के घर में आना पड़ता है। सो दैट इज माई यू नो दैट्स हाउ माई कल्चर वर्क्स। मेरा जो लैंड है वो सबको मैं मुझे ही ख्याल रखना। मेरा दो भाई है, वो दे हैव लेफ्ट होम टू देयर वाइफ्स एंड दे आर स्टेइंग विद देयर फैमिलीज। सो उसी की वजह से द होल स्टोरी स्टार्टेड। हमारा जो क्विजीन है, वी सेलिब्रेट द नेचर। यू वोंट बिलीव इट, हमारे खाने में तेल ही यूज नहीं करते हैं। तो क्या पानी में खाना बनाते हो आप लोग? हाँ, वी लव बॉइल्ड फूड, ब्लांच्ड फूड। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हमारे साथ है मास्टर शेफ इंडिया की फर्स्ट रनर अप नाम्बी। नाम्बी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी, सो एक्साइटेड। व्हाट इज दैट पर्सनालिटी साइड ऑफ नाम्बी जो कि लोग नहीं जानते हैं? मैं बहुत लेजी हूँ टू बी ऑनेस्ट। एंड जब भी लाइक हम फैमिली पिकनिक या कुछ गैदरिंग के लिए मैं बाहर जाती हूँ, तो सब एक्सपेक्ट करते कि मैं अच्छा से खाना बना के उनके लिए लेके जाएंगे। बट हमेशा उल्टा ही होते हैं। आई एक्सपेक्ट फ्रॉम देम एंड आई बी द वन सिटिंग एंड ईटिंग। सो हमेशा बिना एक्सपेक्टेशंस के साथ ही मेरे साथ पिकनिक सब लोग जाता ही है, क्योंकि मैं ही सबसे खाना एक्सपेक्ट करूंगी एंड मैं कभी खाना नहीं बनाते, बिकॉज मुझे खाने की बहुत शौक है एंड आई प्रेफर ईटिंग देन कुकिंग। और नबी, इस चीज से ना मुझे भी एक इंसिडेंट याद आया। काइंड ऑफ व्हेन यू कुक इन द हाउस और आप लोगों को पता होता है कि शी लाइक्स कुकिंग, तो वो कभी ये नहीं सोचते कि शी लाइक्स ईटिंग टू। तो वो हमेशा ये हाँ। एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमेशा खाना बनाएगी। भाई, हमें भी खाने का मन करता है, कभी हमारे लिए भी बना दिया करो। इट्स लाइक कि द चाय पर्सन इन द हाउस इज ऑलवेज मेकिंग टी। वो उसको कभी वापस सुबह सुबह चाय नहीं मिल सकती है बाय डिफॉल्ट। सच में। हाँ। Uh, okay. Nambi, few of the other contestants have already said कि you have a spark, आप चीजें बहुत सेलिब्रेट करती हो। तो आई जस्ट वांट टू नो कि इतनी एनर्जी या इतनी चीजें जो, लाइक यू सेड यू आर लेजी एंड दे थिंक दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। दोनों चीजें बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो हाउ डू यू जस्टिफाई योर आंसर एंड theirs? So I think my spark comes from the community that I come from. मैं एक रिमोट विलेज से हूँ। आप जानते होंगे, अपर रंगसा नाम है इस गांव का। सो हर जो लाइक इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है एंड जो कल्चर जो है हर चीज को लेके यहाँ पे, सो एवरीथिंग इज टू बी सेलिब्रेटेड। सो आई थिंक माई वैल्यू जो मैं किचन में डालती हूँ विद माई इंग्रेडिएंट्स एंड माई थॉट प्रोसेस ऑल कम्स फ्रॉम अप्रिशिएटिंग के खाना कहाँ से आते हैं। एंड आई डोंट नो इफ आई कैन शो यू, बट आई वांट टू शो यू माय बैकयार्ड अभी, लाइक लाइक दिस इज where I live in the middle of the jungle. So I mean, I think the appreciation and that spark comes from having to work hard for your food and really appreciating the hard work that goes into making this food. So yeah. ओके नबी, द कम्युनिटी जिससे आप आती हैं, लाइक द ईस्टर्न रीजन, वहाँ का Yeah. कल्चर अभी भी थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड है। बहुत हद तक लोग उसके बारे में नहीं जान पाए हैं। तो इफ यू हैव लाइक 2 minutes और समथिंग, तो व्हाट आर द थिंग्स जो आप अपने कल्चर के बारे में बताना चाहेंगी दैट अट्रैक्ट्स पीपल टुवर्ड्स कि वो वहां पे जाएं, फूड टेस्ट करें, कल्चर एक्सप्लोर करें या जगह एक्सप्लोर करें? हाँ, सो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट कुजीन है वो बहुत अनएक्सप्लोर्ड है एंड बहुत ही अंडररेटेड है। एंड उसके नॉर्थ ईस्ट कुजीन के साथ बहुत सारा स्टीरियोटाइप्स अटैच्ड है, जहाँ पे लोग समझते हैं कि हमारे खाने जो है इज लाइक वेरी जंगली एंड वी आर लाइक वाइल्ड पीपल लिविंग इन द हिल्स एंड ऑल, बट इट्स completely the opposite of that. I think the most calmest and the most the best kind of people comes from the hills. एंड हम एक मेट्रिलिनियल सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ। एंड मेट्रिलिनियल सोसाइटी में जो औरत है घर का, वो ही सबको संभालते हैं। द मेन आर ऑलवेज द हेड ऑफ द हाउस, लेकिन
लाइक फॉर एग्जाम्पल जब भी मेनलैंड में शादी होते हैं तो लड़की घर छोड़ के उसके पति के घर पे जाते हैं ना। हमारे यहाँ नहीं होते। पति अपने घर को छोड़ के लड़की के घर में आना पड़ता है। सो दैट इज माई दैट्स हाउ माई कल्चर वर्क्स। एंड इट्स अ मेट्रिलिनियल सोसाइटी। सो मैं एक बेटी हूँ मेरी फैमिली में। सो आई एम सपोज टू टेक केयर ऑफ द फैमिली एंड मेरा जो लैंड है वो सबको मैं मुझे ही ख्याल रखना। मेरा दो भाई है, वो दे हैव लेफ्ट होम टू देयर वाइफ्स एंड दे आर स्टेइंग विद families. So उसी की वजह से the whole story started in this forest is because मैं चेन्नई में थी। आई एम अ सिटी बॉट अप गर्ल एंड मैं सिटी में जब पढ़ाई करके मेरा शादी भी हो गया था चेन्नई में। तो मेरा पति और मैं दोनों काम छोड़ के इस गांव में सेटल होने के लिए आ गए, क्योंकि मैं लड़की होके मैं आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय मम, राइट, my parents. We've been here since, and we've been trying to make a living by starting the farm and all of that. So our culture is not just interesting. There's so much to learn from our culture. But if you talk about cuisine wise, is also amazing क्योंकि हमारा जो cuisine है, we celebrate the nature in the sense that like हमारे खाने में गरम मसाला या कुछ शूशा हुलाबलू नहीं है हमारे खाने में। आई मीन वी आर वेरी सिंपल, वी लाइक आवर इंग्रेडिएंट्स टू बी नेचुरल। वेजिटेबल्स जो है जब हम पकाते हैं वेजिटेबल्स जैसा टेस्ट करता है। मीट जो है, चिकन जो है हम पकाते हैं, it tastes like chicken with no show off of masalas and anything. So we love to taste our food then in its own natural form. We cook it very blandly. All the spices जो भी हमारे खाने में यूज करता है वो बगान से है। जिंजर, टर्मरिक, पेपर जो है वो सब it's from the farm. It's very natural and we really like our food simple without oil. You won't believe it, हमारे खाने में तेल ही यूज नहीं करते हैं। तो क्या पानी में खाना बनाते हो आप लोग? हाँ, we love boiled food, blanched food, and बहुत कम तेल यूज करते हैं। And जो भी लाइक तेल यूज करते हैं, लाइक एग्जांपल चिकन का फैट होता है वो उसी को हम उसी से फैट से पकाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। सो या। ओके, आई हैव कम टू नो फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स। एक तो वो कि जो लड़के होते हैं फैमिली के, दे लीव देयर हाउस, एंड दिस वन की विदाउट ऑयल कुकिंग होती है। तो नंबी, नेक्स्ट आई वांट टू नो कि एज यू मेंशन कि मास्टर शेफ जर्नी में यू केम टू रियलाइज कि आप एक स्टोरी टेलर। तो एट व्हाट पॉइंट या क्या चीजें ऐसी रही व्हेन यू रियलाइज दिस, एंड हाउ यू वांट टू टेक दिस फर्दर? आई थिंक हर प्लेट जो है, लाइक whatever खाना that I served in the MasterChef kitchen, everything had a story. And मुझे MasterChef kitchen में काम करते हुए मुझे समझ में आया कि I need to connect, I need to find a story, I need to relate everything to the amazing stories that we have in our culture. So and मुझे पता चला in the competition that I'm really good at connecting stories and making a connection between, especially मेरी हस्बैंड की स्टोरी। ही साउथ इंडियन, ही फ्रॉम ही इज अ तमिल। एंड मैं ईस्ट से हूँ, मेघालय से हूँ। सो ये दोनों ब्यूटीफुल कल्चर्स के स्टोरीज भी मैं प्लेट में लेके आती हूँ। आई मीन हमारे कल्चर, हर कल्चर बहुत अलग होते हैं and हर कल्चर की बहुत अच्छी अच्छी चीजें होते हैं। एंड आई थिंक हमारे जो कल्चर है वो बहुत अनएक्सप्लोर्ड है। इतना सारा स्टोरीज एंड अमेजिंग थिंग्स आर देयर। सो आई फील लाइक कि मैं जब भी खाना पकाते हो आई ट्राई टू सॉर्ट ऑफ जस्ट रिफ्लेक्ट एंड फाइंड अ कनेक्ट ऑन माय प्लेट। ओके नम्बी, तो फर्स्ट रनर अप होना जस्ट अ लास्ट स्टेप जो कि रह गया शायद विनर और शेफ कोट जीतने को लेकर के। तो हाउ वाज दैट फीलिंग? आई नो इट्स वेरी टफ जब आप खुद उस जगह पे खड़े हो एंड यू नीड टू क्लैप फॉर समवन जो जीत चुका है और आप एक स्टेप बैक कर चुके हो। तो उस पॉइंट पे व्हेन यू वर क्लैपिंग फॉर हिम एंड सैड फॉर योरसेल्फ एज वेल, उस पॉइंट पे आपकी क्या फीलिंग थी? um, जब अनाउंस किया गया था कि मोहम्मद आशिक इज द मास्टर शेफ विनर,
मैं थोड़ा देर के लिए I was completely blank, like I mean I realized कि like you know I was very close, and जैसे जजेस ने बोला कि बहुत close था, hairline था decision. So I mean it was definitely heartbreaking because ये there's the saying, the winner takes it all. I mean so that definitely that punch, that blow, that that whole excitement of like winning the title, and to also have like thousands and lakhs of people to support your journey, you feel like you have sort of disappointed them in a way. But I think overall, like, it was it was um it was, I don't know what to say. I mean, I'm still like shaking from thinking about it. I'm really really happy for Ashik. He deserves to win. But I मुझे यही realize हुआ कि that I gave him a very tough battle and I fought well till the end. ओके, कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए ये टाइटल जीतना? आई मीन व्हाट वर द थिंग्स जो कि आपके लिए चेंज हो सकती थी अगर आप विनर होते, एंड इट्स नॉट नाउ बिकॉज यू आर जस्ट द फर्स्ट रनर अप? um I think it was very important title jeetna, क्योंकि I think if you look back as a woman, I think इस बार I really wanted a woman to win. It was me or Ruxar. I wanted either of us to win, really, to be honest. And I'm sorry कुछ I'm change, interrupting you. I'm really sorry I am interrupting you. But ये yeah. चीज मुझे सच में मुझे भी नहीं समझ आ रही, because you know the women in the family या फिर in our society is always related to food. They are called the Annapurna. And when it comes to this competition of cooking, there's always the man who takes the trophy. And why? क्यों? No, really, I completely agree. And I thought this time, a woman would be winning the title, and I really expected that maybe there would be a change. And Ruxara and I gave a tough battle to Ashik, and I'm really glad about that. But seriously, I completely agree with you. Women are known to be like the queens of the kitchen, and yet we don't win the title. This is not right. Now let's connect to the chefs. कुछ तो उन्होंने बायसनेस की है, आई थिंक सो. बट स्टिल एक और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि लाइक एज यू गो टू लाइक मेट्रो सिटीज, लोग आपका काम पहचानते हैं या फिर मास्टर शेफ देख रहे हैं, इज इट स्टिल जो आपके आसपास के लोग हैं दे आर कमिंग कमिंग अप, या फिर उनको अभी तक इस चीज की समझ नहीं है दैट आप क्या कर रहे हो या क्या आपने किया हुआ है इनटू लाइक मास्टर शेफ? I think स्पेशली मैं एक गांव से हूँ, सो फॉर द विलेजर्स टू कॉम्प्रिहेंड एंड ऑल्सो कि अंडरस्टैंड करना कि मास्टर शेफ इंडिया जो है इज लाइक वे अप देयर, द प्लेटफॉर्म इज वेरी ह्यूज. फॉर देम टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स इज वेरी डिफिकल्ट, but they have been watching like YouTube videos, and they've been hearing news, so they all of them have really been excited that like that I have put मेरी गांव को एक मैप में अभी and all of that. So if I like walk around the Mumbai airport, people recognize me. But if I come down to Guwahati airport, people are still like, okay, who's she? Like nobody like really cares. So I mean, yes, I think there is a huge difference, especially because I think the whole crowd itself is different. Yesterday, when I had actually gone down immediately to Shillong, and I just returned home to my village yesterday, and the kind of welcome that I got from the villagers, and these are all illiterate, सारे गांव वाले जो है मेरे लिए वेट करके मुझे एक हमारा ट्रेडिशनल गारमेंट पहनाया एंड ऑल ऑफ दैट, एंड एक फंक्शन लगाए मेरे लिए. एंड हमारे गांव में बस 48 छत है, एंड सारे लोग निकल के आए, छोटे बच्चे बच्चे से सबसे ओल्डेस्ट पर्सन निकल के मुझे कंग्रेचुलेट करने के लिए निकल आया. So I was very overwhelmed and so touched कि even though these people are not aware more of like the that I've become like the first runner up in MasterChef, फिर भी like these people appreciate करने के लिए मुझे देखने आया कल. So it was really overwhelming, and it was such a beautiful experience.
Okay, Nambi. So like you already have one of your business, like you're running something. तो आगे how do you want to take this या फिर कैसे what are your next plans for this? Yes. So basically, I have a small business where I make pickles. Okay, and I've been मैं ये जो pickles है, chicken से pickle बनाती है, and जो भी trees में like fruits or vegetables, मैं उसी से ही pickles बनाती हूँ. And मैं कैसे बेचती हूँ? मैं basically Instagram से DMs लेके बेचती हूँ, and it works really well. लेकिन after MasterChef, I'm thinking of upscaling it, launch a website, or get proper packaging, proper everything done, so that मेरा जो business है, it will you know it will get better. So I'm really looking forward to that. मैं अभी रेस्टोरेंट नहीं खोलूंगी. एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि अभी नंबी एक रेस्टोरेंट खोलेंगी, यू नो एक साउथ मीट्स ईस्ट वाला रेस्टोरेंट खोल के अभी आई मूव टू द टाउन एंड सिटी एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन आई विल नॉट डू दैट इमीडिएटली. आई really want to concentrate मेरी pickle business में. And मेरा जो school है उसको भी I need to work on getting funds for the school and all of that. So I'm based in the village only for now. ओके, तो आप वो पर्सन हो जिसका वो हिंदुस्तान का हिस्सा हो जिसका दिल अभी भी गांव में बसता है, राइट? हाँ. ओके नाम्बी. सो इट्स लाइक रियली ओवरवेलमिंग टू सी अ पर्सन आज के डेट में भी जो इस तरीके से सोचता है. और एवरीवन वांट्स टू लाइक मूव इनटू सिटीज. इफ यू हैव सच बिग बिग प्लेटफॉर्म तो आप ऐसी चीजें करना चाहते हो. बट स्टिल हैट्स ऑफ टू यू दैट आप ऐसी चीजें कर रहे हो. तो नाम भी आपके कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं इनटू द मास्टर शेफ किचन. एज आप कभी ब्लैक एप्रन चैलेंज में नहीं गई, एंड शायद ये बहुत रेयर हुआ है कि कोई कंटेस्टेंट कभी ब्लैक एप्रन चैलेंज में नहीं गया है. हाउ डिड यू मैनेज टू हाँ. एस्केप फ्रॉम दैट ऑल द टाइम? कॉल इट अ कोइंसिडेंस, बट मैं एक स्ट्रैटेजी के साथ खेलते थे. लाइक फॉर एग्जांपल, जब भी हम लोग मंडे को किचन में जाते थे, आई न्यू दैट इट वाज अ सेफ डे, कि मैं आई कैन डू एनीथिंग आई वांटेड ऑन दैट डे, टेक रिस्क, इवन गेट द वर्स्ट कमेंट्स. बट मंडे में रिस्क ले सकती थी क्योंकि उस दिन एलिमिनेशन नहीं होंगे. एंड after Monday, there's like no more playing. It's like you have to do your best no matter what. So मैं जो भी चैलेंज होता था इन माय माइंड, द नाइट द डे दैट बिफोर द नेक्स्ट चैलेंज, कि उस दिन आई विल थिंक ऑफ अ डिश. जो भी डिश हो, एनीथिंग अराउंड द वर्ल्ड, जो भी हो, हमारे यहाँ से हो, साउथ से हो, मैं उस डिश के साथ सोऊंगी. एंड मैं यही सोच के ही सोऊंगी कि मैं कल जो भी चैलेंज हो, जैसे भी चैलेंज लेके आए, मैं वो ही डिश बनाऊंगी. जो भी इंग्रेडिएंट्स मेरे पास सामने रखेगा, उसी इंग्रेडिएंट से मैं यही डिश बनाऊंगी. तो मैं उसी माइंडसेट से जाती थी हमेशा. एंड इट वर्कड रियली वेल फॉर मी, सच्ची में. एंड जब भी सेफ होने के राउंड आ जाते थे, एंड देन ऑल द ग्रुप चैलेंजेस वी वॉन. सो एट आई वाज सच्ची में इट वाज फर्स्ट टाइम जब मैं फाइनल्स राउंड में गए थे. इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट मैं प्रेशर टेस्ट के लिए भी गए थे. सो आई वाज वेरी स्केर्ड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं कभी भी प्रेशर टेस्ट नहीं की. एंड मैं ऊपर से देखती आई हूँ सबको प्रेशर टेस्ट करते हुए. एंड वहां पे भी मैं मुझे बहुत टेंशन होता था आज. एंड मैं उस दिन जब गोल्डन एप्रन में प्रेशर टेस्ट करने के लिए गए थे, आई वाज एक्सट्रीमली नर्वस. आई वाज लाइक, ओ शिट, मैं आज यही नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आई हैव नेवर डन अ प्रेशर टेस्ट बिफोर. आई थॉट आई वाज गोना फेल, बट I ended up doing my best, and in fact, I performed the best, I think, on the golden apron pressure test. So I've been very lucky, and it's just that I went in with a strategy. On Mondays, I will do an average performance, and then after that, there was no messing around. ओके, तो आई केम टू नो कि लाइक दो ग्रुप्स थे. दे वर लाइक बेटिंग ऑन यू एंड आशिफ आशिक सॉरी. तो हु वर द वंस जो कि आपकी साइड पे थे, एंड हु वर द वंस जो कि उनकी साइड पे थे? I will not take any more name other than one person who was there
शुरू से लाइक till the end, वो था अंकल हैरी। अंकल हैरी जो है मुझे घोड़ा बुलाता था। एंड देन लास्ट दिन was like, चलो मेरे घोड़ा अच्छे से दौड़ो आज। All of that. So I mean, I think Uncle Harry was like the biggest supporter. And yeah, I mean, सब actually सबको, I mean, this time का vibe कुछ अलग ही था। आई I मीन mean, सब एक दूसरे को पसंद करते थे। वी वर वेरी क्लोज एंड सब इतने अच्छे दोस्त थे। सो आई थिंक जो भी जीते वी वर ऑल गोइंग टू बी रियली हैप्पी। So I think the biggest supporter has to be Uncle Harry, and yeah. Okay, Nambi, thank you. Thank you so much for being Thank with us on our channel. And last few words अपने जो भी fans हैं या जो भी tips है for people. Firstly, thank you Tulika for having me. मुझे बहुत I had so much fun and talking to you. And for all my supporters, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि thank you so much. And I have not been able to respond to each and every one of you. इतना overwhelming and I'm so humbled आप लोगों के से support मिलने के लिए, and I'm so thankful कि मैं आज I'm standing here as a first runner up Masterchef, and I know I've made you guys proud. I gave a good battle, and जो भी next year Masterchef next season के लिए आने चाहते हो please do so, क्योंकि मैं सोचती थी कि I'm like a mother, and मैं ये सब छोड़ के मैं ये सब कैसे करूंगी and all of that, but I did it, and anyone can do it if I can. So all please, I'll love to see many more faces and many more stories on a plate next year. So yeah. And the name of my channel is Eat Your Kappa with a double P, and don't forget to subscribe, like, and share.